Hello, very good evening to all of you. Everyone joined. Namaskar, Girija, Uday, you joined. Okay. Samaste join kale. Everyone joined. Uday Konu sir, when will I give mock test for mains exam of UPSC? Actually, I'm not sure about it. ବର୍ଷା ପ୍ରଣାମ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କଲେଣି ଶିବାଙ୍ଗୀ ବର୍ଷା ଗିରିଜା ନମସ୍କାର ସନ୍ତୋଷ mock test ପାଇଁ when you feel you are prepared तो ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲି ପଢା ସରିଗଲା ମୋର ତାପରଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ ତାପରଠୁ ମେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ ତାପରଠୁ ମେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଠିକ ଅଛି କଣ ପଢୁଥିଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହଉ ଆଜି କେତେଟା इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर डिस्कस करी ऑन लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई ये दीटा बहुत इंपोर्टेंट प्रीलिम्स पाई विथ रेस्पेक्ट टू प्रीलिम्स ये दीटा टॉपिक रो रिलेवेंस बहुत अधिक हैला तो दीटा टॉपिक हां टैक्सेशन पढुतिले हमें लास्ट टाइम शिवांगी टैक्स बुझियला सब जहा पढितिले अच्छा पचारि मु जहा पढैतिले लास्ट क्लास मु पचारि बट एट द एंड सरिला परे क्लास सरिला परे पचारि एबे डिस्कस करबा हमें किछि कांसेप्ट को आसीबा एबे हमें किछि कांसेप्ट को आसीबा आज क्लास में लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई डिस्कस करबा ना डिमांड और सप्लाई पढी चंदी समस्ते ना नहीं डिमांड और सप्लाई पूर्व पढ़ी चंदी ना आज फर्स्ट टाइम पढ़ी चंदी ओके अन्य मान सब कुआडे गले where are others पढ़ी चंदी बढ़िया ताले मते कोन व्हाट इज डिमांड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड डिमांड कहले हमें कोन बुझछि कोन मोर क्वेश्चन होचे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड डिमांड कहले हमें कोन बुझछि पढ़ी छ बहुत बढ़िया दीटा जिंस देखा जाय डिमांड रे गोटेला फर्स्ट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड एबल टू बाय कोन कहली what a consumer is willing to buy and able to buy मु कहबी मोर डिमांड अछि मु कटक रु भुवनेश्वर फ्लाइट रे जाई की पढै के आसी this is can it be a demand because I have willing but I don't have ability I cannot afford it willing तो अछि इच्छा तो अछि but available but affordability नाही so willingness plus ability is equals to demand willingness plus ability is equals to कौन कहते दिस इज इक्वल्स टू डिमांड बुझिला डिमांड कौन विलिंगनेस और एबिलिटी दीटा रहिले हमें ताकू डिमांड कहबो अदरवाइज इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डिमांड अदरवाइज इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डिमांड फर्स्ट बुझिला डिमांड कौन सो विलिंग थिबा दरकार प्लस एबिलिटी थिबा दरकार दीटा जाक रहिले कहबो हमें ताकू डिमांड ना डिमांड फंक्शन कौन कहूची ना डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड
and commodity and the price of the commodity कौन कहली दीटा कथा क्वांटिटी डिमांडेड केते क्वांटिटी अछि इन डिमांड एवं तार कमोडिटी रो प्राइस केते एवं कमोडिटी रो प्राइस केते एई दीटा भीतर जो कनेक्शन अछि दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन कौन कहली जो कनेक्शन अछि दैट कनेक्शन इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन हैला बुझिला डिमांड फंक्शन कौन सो क्वांटिटी डिमांडेड एक and the commodity and price of the commodity दीटा भीतर जो कनेक्शन अछि ताको हम डिमांड फंक्शन नाउ लॉ ऑफ डिमांड कौन कहूछ कौन के लॉ ऑफ डिमांड कौन कहूछ लॉ ऑफ डिमांड कहूछ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्स को रिलेशन देन द रिलेशनशिप इज इनवर्स रिलेशन कौन कहले ठीक कोरिलेशन अछि द रिलेशन इज इनवर्स इनवर्स रिलेशन अर्थ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्स रिलेशन अर्थ हम एटी कोन देखुचे कोन कहली एटा प्राइस डिमांडेड प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एटी इनवर्स रिलेशन हम कोन देखुचे सिंपल जिंस कहू देखो गोटे एग्जांपल दोछ लेट्स से एबे ग्रेप्स आसुची मार्केट को ग्रेप्स केजी केते अछि ना अधिक टंगा थिबो नुवा नुवा आसिले मार्केट को तो प्राइस अधिक थाए लेट्स से 200 रुपीस पर केजी ना 200 रुपीस पर केजी अछि एबे डिमांड माने कर मार्केट रे हम देखले लेट्स से देयर इज अ डिमांड ऑफ 500 केजी पर डे 500 केजी अछि ना 200 केजी रो प्राइस कमी केला 150 पर केजी हो तापर 100 रुपीस पर केजी हो 50 रुपीस पर केजी हो हैला एमदी प्राइस ता कमी हो तो एटी 500 केजी थिला एटा 150 तळे जो एटी लेट्स से डिमांड बढ़ी के गेला केते डिमांड बढ़ी के गेला एटी माने कर 800 केजी डिमांड हेगला कहना प्राइस कमु एठी प्राइस कमिला आहुरी डिमांड बढ़ी के गेला लेट्स से 1200 केजी 50 टका जतळे हेगला हेगला 2500 केजी तर हम कोन देखले प्राइस कमिले डिमांड बढ़ुची ना कमुची प्राइस कमिले एठी डिमांड कमुची ना बढ़ुची को एठी प्राइस जतळे रिड्यूस होउची डिमांड कोन होउची डिमांड बढ़ुची ताले एठी हम कोन देखले ना प्राइस इंक्रीजिंग एंड क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस इंक्रीज हेले क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो जाउची प्राइस कमिले क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ुची सो हायर द प्राइस लोअर द डिमांड and lower the price higher the demand ताले डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन lower the price higher the demand lower the price higher the demand बुझिए गला ताले एटा बुझिए गला ताले यार ग्राफ एटा को आसीबा हमें देखिबा केमति एटा फिगर करि परिबा फिगर आउट केमति करि परिबा ग्राफ एठी नि आइछि x एक्सिस रे डिमांड कर्व डिमांड नि आइछि एवं y एक्सिस रे नि आइछि प्राइस एठी देखो प्राइस कोटी y एक्सिस रे देखो प्राइस ता एठी बढ़ौछि ठीक मार्क कर मन देखि देखो प्राइस बढ़िला बढ़िला प्राइस बढ़िला बढ़िला प्राइस बढ़िला एठी प्राइस बढ़ि कि मैक्सिमम होछि ना डिमांड कोन होछि देखो एठी तो प्राइस तला एति कि एटा तला डिमांड ना डिमांड कमिला प्राइस बढ़िला पुन डिमांड कमिला एठी प्राइस बढ़ि गला डिमांड आउरी कमि गला पुनी प्राइस बढ़िला पुनी डिमांड कमिला पुनी प्राइस बढ़िला डिमांड कमिला प्राइस बढ़िला डिमांड कमिला सो प्राइस बढ़िवा सहित हम देखुचे डिमांड कमी कमी जाउची हला वर्षा कंफ्यूज करछि एमसीक्यू हम करबा एमसीक्यू बेस्ट हो तो एई पॉइंट जदी हम देखिबा एई पॉइंट रे डिमांड सबुटु अधिक हाईएस्ट डिमांड मैक्सिमम एंड प्राइस सबुटु कम प्राइस लो एई पॉइंट रे डिमांड सबुटु कम प्राइस सबुटु अधिक नुहे तो एटा इनवर्स रिलेशनशिप को देखौछि तो मु लिख परिबी डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लिख परिबी डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लिख परिबी इज दिस क्लियर लिखियो लिखियो करेक्ट ओके then demand function हमें बुझी गले now what are the determinants of demand
को फैक्टर डिमांड डिटरमाइन करूछन व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन डिमांड कौन कहले को फैक्टर डिमांड को डिटरमाइन करिवे मते को बा को फैक्टर डिमांड को डिसाइड करिवे कौन कहले को फैक्टर डिमांड को डिसाइड करिवे ना प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑलरेडी पढ़िले प्राइस अधिक अछि तो डिमांड कम प्राइस कम अछि तो डिमांड अधिक बुझिला प्राइस ऑफ द कमोडिटी करेक्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी ना प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स माने मुके बस फेयर ता डिपेंड करूची फ्यूएल प्राइस ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द फ्यूएल प्राइस कप ऑफ टी कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द शुगर जो प्रोडक्ट आम खाऊचे गोटे होटेल ले बसिकी तार रेंट सहित से प्रोडक्ट रो प्राइस भी भ्यारी करूची रेंट अधिक हेले प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़ी जो नुहे सो दीज आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड नाउ प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स बुझेला कौन कहले प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स क्लियर नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेक्स्ट हम देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड now elasticity कौन elasticity this is the measure of rate of change in the quantity of goods demanded in relation to the change in price simple कथा मने करो क्वांटिटी डिमांडेड थिला 100 केजी एबे 100 केजी ता बढ़ी के जाई 150 केजी ताले केते परसेंट तार क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होला ना 50% डिवाइडेड बाय हम कहले परसेंटेज चेंज इन प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस ना परसेंटेज चेंज इन प्राइस ता हमें देखुचे कोडी परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखुचे माने करो तार प्राइस रिड्यूस हो जाई 30% सो 50% बाय 30% 5:3 इज द रेशियो 5:3 इज द रेशियो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी बुझेला इलास्टिसिटी कोन दीप्ति ऑफर केते दिन रहिबो त मु कहि परिबिनी बट एटा जेहेतु ऑलरेडी 26th ऑफ जनवरी जाई सारिची बहुत जल्दी सरी जीवो ऑफर बहुत कम टाइम पीरियड एक्सटेंडेड ऑफर प्राइस एक्सटेंड है सो इफ यू वांट सब्सक्रिप्शन देन टेक इट as soon as possible otherwise ऑफर टा कोन से टाइम रे ड्रॉप हो जाय पारे ताले बुझेला price elasticity of demand clear what is price elasticity of demand clear next point question types of goods को आसीबी बट ता पूर्व टिके मु सप्लाई ऊपर कहि दउ ना प्राइस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स टे देखियो सब्स्टिट्यूट गुड्स मन कर चा और कॉफी अछि लेट्स से टी कप रो प्राइस अछि 5 टंका हेबे चा कप कॉफी प्राइस अछि 10 टंका यदि चा कप रो प्राइस बढ़ी कि 10 टंका हे जाय ताले लोक चा पीबे ना कॉफी को स्विच करिवे यदि चा कप रो प्राइस बढ़ी कि 10 टंका हे जाय ताले लोक चा पीबे ना कॉफी को स्विच करिवे कोन करे कॉफी को स्विच करिवे हैला अब सब्स्टिट्यूट गुड्स सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी आल्सो इंक्रीज चा रो प्राइस बढ़िले कॉफी रो डिमांड बढ़ियो कहीं ना चा प्राइस बढ़िले कोन कहली कॉफी रो डिमांड बढ़ियो काहे की बढ़ियो एट तुम कहो चा प्राइस बढ़िले कॉफी रो डिमांड काहे की बढ़ियो ना पीपल प्रिफर कॉफी टू टी पीपल प्रिफर कॉफी टू टी व्हाई ना बिकॉज़ प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीजिंग सेति पई सोन प्रिफर करिवे हला एंड कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स ना जो गुड्स गुडा का रिलेटेड टू ईच अदर मुझे कहली ऑलरेडी सुगर प्राइस बढ़िले टी प्राइस बढ़िबो ना नहीं फ्यूएल प्राइस बढ़िले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़िबो कि नहीं फ्यूएल प्राइस बढ़िले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़िबो कि नहीं बढ़िबो यस ओके नेक्स्ट नॉर्मल गुड्स ना हम इनकम बढ़िबा सहित किछि प्रोडक्ट रो प्राइस सॉरी हम इनकम बढ़िबा सहित किछि प्रोडक्ट हम ऑटोमेटिकली किनुचे
जमी कि इनकम बढ़िले आम गोटे टीवी फ्रिज वाशिंग मशीन ये सब किणी किणी चलचे so demand for these goods increase with increase in income बढ़िले डिमांड बढ़ुଛି लाइक ऑर्डिनरी टीवी कौन कहली लाइक ऑर्डिनरी टीवी है बुझेला ऑर्डिनरी टीवी रे कौन होଉଛି इनकम बढ़ी जाଉଛି इनकम बढ़िले ऑर्डिनरी टीवी पे डिमांड बढ़ुଛି नेक्स्ट इन द सेम वे आम इनकम बढ़िया सहित किछि जिंस हम यूज करिया बंद कर दउछु जेमति कि कौन बंद कर दउछु यूज करिया आम यूज करिया केरोसिन बंद कर दउछु चुल्ली बंद कर दउछु साइकिल लो यूज बंद कर दउछु ये सब ग्रेजुअली हम बंद कर दउछु नहीं ये सब कौन करछ ना ग्रेजुअली हम बंद कर दउछु जहा कहू इन्फेरियर गुड्स सो द डिमांड फॉल्स विथ द इंक्रीज इन इनकम demand falls with increase in income so when household get richer they use less kerosene ame rich hele less kerosene use kariya obviously we will start using less kerosene bujhela inferior goods kon what are inferior goods clear next आउ किछि प्रोडक्ट थाए जे प्राइस बढ़िले भी आमे ताको यूज करिया काहे तार देयर इज नो सब्स्टिट्यूट मो कोइ आलू पोटैटो प्राइस बढ़िले भी आमे ताको कंज्यूम करिया बिकॉज़ देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू पोटैटो so when price of potato rises people don't have other option so you are compelled to purchase potato that is called given goods आउ बेले बेले देखते जो माने आईफोन धरंती देखो से एमती धरते आईफोन लोगोटा ठीक तुमको देखा जाउथि नुई आईफोन लोगोटा ठीक देखा जाउथि हम जोड़ा दामी प्रोडक्ट ना कहीं की किन दामी प्रोडक्ट ना विथ द इंटेंशन ऑफ दामी प्रोडक्ट्स आर बेटर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर बेटर कौन कहली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर बेटर एया भाबी की किन एंड दोज प्रोडक्ट्स आर नोन एज वेवलेंट गुड्स से प्रोडक्ट को कौन कहंती दोज प्रोडक्ट्स आर नोन एज वेवलेंट गुड्स ताले बुझेला 6टा टाइप रो गुड्स जहा जा कहली वेवलेंट गुड्स एंड ऑल नेक्स्ट पॉइंट को आसी सप्लाई नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा सप्लाई वेरी गुड इवनिंग प्रज्ञा परमिता ना सप्लाई कौन जेमिति आमे डिमांड रे पढ़िले ठीक सेमति आमे सप्लाई कौन बे देखिबा सप्लाई किए करिवो डिमांड करथिला कंज्यूमर बा कस्टमर सप्लाई इज बाय अ फार्म ये सप्लाई करिवो सप्लाई विल बी डन बाय अ फार्म so when the farm is willing and is able to sell at given price when the farm is willing and able to sell at a given price तो गोटे प्राइस रे गोटे फार्म देई परिवो बिक्री करि परिवो that is called supply खाली willing है लावनी both willing and ability दीटा जाक थिबा दरकार both willing plus ability both are required willing and ability both are required supply function कौन कहूची ये supply function shows the relationship between quantity supplied and own price क्या भीतर quantity supplied and own price so all other things being constant also all other things being constant बुझी गला ताले लॉ ऑफ सप्लाई कौन कहला लॉ ऑफ सप्लाई कहूची इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्रीजेस सिंपल प्राइस बढ़िले सप्लाई बढ़े मन कर ये प्राइस रो प्रोडक्ट थिला 20 टका ये प्रोडक्ट रो प्राइस पेनटा थिला 20 टका तो मार्केट रे एटा प्राइस बढ़ी कि 30 टका हे गला ताले मते को यार सप्लाई बढ़िबो ना कमिबो एबे जो प्राइस टा 20 टका थिला सेटा बढ़ी कि 30 टका हे गला ताले यार सप्लाई टा बढ़िबो ना कमिबो कोन हो बिकॉज जो प्रोड्यूसर सब चाहिए अधिक प्रॉफिट करिया पई कौन कहली प्रोड्यूसर चाहिए अधिक प्रॉफिट करिया सो प्रोड्यूसर जो अधिक प्रॉफिट करिया चाहिए प्रोड्यूसर जो अधिक प्रॉफिट करिया चाहिए अधिक बिक्री करिया पड़ो प्रोड्यूसर हैज टू सेल मोर इन द मार्केट प्रोड्यूसर हैज टू सेल मोर इन द मार्केट बुझिला सप्लायर बढ़ेइबो सप्लाई कहीं बढ़ेइबो सप्लाई बढ़ले तार प्रॉफिट बढ़िबो जदि मु सप्लायर ताले मु सप्लाई अधिक करी बिकॉज़ मो प्रॉफिट बढ़िबो सप्लायर रो इंटेंशन सबले मु प्रॉफिट बढ़ेइबी सप्लायर रो इंटेंशन मु प्रॉफिट बढ़ेइबी ताले इटी कोन होबो मो प्रॉफिट बढ़िबो बढ़ेइले सो आई विल डू मोर सप्लाई कोन करिवि ना मु इटी अधिक सप्लाई करिवि सो प्राइस इफ प्राइस इंक्रीजेस द प्रोड्यूसर वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट
प्रोड्यूसर एटी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिया को चाहिए सिंपल कथा ताले इक्विलिब्रियम स्टेट कोन बा परफेक्ट इक्विलिब्रियम कोन ना जोटी डिमांड जति की सेटी सप्लाई सेति डिमांड जति की से डिमांड जति की सप्लाई सेति की मन कर 200 केजी रा डिमांड अछि प्रोडक्ट मार्केट रे 200 केजी अवेलेबल 500 केजी रा डिमांड अछि 500 केजी अवेलेबल 1000 केजी रा डिमांड अछि 1000 केजी अवेलेबल हैला now this is called the condition of equilibrium now equilibrium state को समस्त graphical representation देख पारथबे equilibrium state this is the graphical representation of equilibrium state बुझियला clear ताले equilibrium state कोन कहूची ना demand and supply when demand and supply these are balanced that is called the stage of equilibrium or this is called the condition of perfect competition so equilibrium occurs when the quantity requested and quantity provided are equal quantity requested and quantity provided are equal this is called the condition of equilibrium बुझियला equilibrium कोन बुझियला ओके चलो ताले ये बुझियला ताले देखिए हम इलास्टिक इनइलास्टिक और जीरो प्राइस इलास्टिसिटी कोन देखो जदी प्राइस चेंज हैला ठीक है बुझा मन दे बुझियला समस्त एबे आउट गोटे पॉइंट बुझा मन कर प्राइस चेंज हैला प्राइस चेंज सहित क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हैला कोन कहली प्राइस चेंज हैला जदी एवं प्राइस चेंज सहित क्वांटिटी डिमांडेड भी जदी चेंज हैला ताल ताको कोआ जाय कोन दैट इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड कोन कहली दैट इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड बुझियला इलास्टिक डिमांड कोन प्राइस चेंज सहित चेंज इन प्राइस सहित चेंज इन डिमांडेड सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड जदी हैला ताल तो कोआ जाय दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी हैला नेक्स्ट जदी प्राइस चेंज हे गला बट प्राइस चेंज सहित क्वांटिटी डिमांडेड निहाती किछि चेंज डजंट चेंज मच सेमिति निहाती किछि चेंज हैला नाही कोन सेमिति निहाती किछि चेंज हैला नाही दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक डिमांड कोन दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक डिमांड सेटा को हम इनइलास्टिक डिमांड बोली कहले सेमिति आउटला जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यदि बिल्कुल किछि चेंज हैला नहीं देयर इज नो चेंज प्राइस जहां भी हो धर कोविड वैक्सीन ना प्राइस बढ़ू कम कोविड मेडिसिन पैरासिटामोल ये को लोक खाइबे ही खाइबे प्राइस बढ़िया कमिया सहित आर किछि संपर्क नाही नय कि प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज सहित आर किछि रिलेशन नाही हला तो ता कहला जीरो प्राइस इलास्टिसिटी तो तीनटा कथा कहली देखि दियो इलास्टिक इनइलास्टिक जीरो प्राइस इलास्टिसिटी यदि डाउट रहला को बुझेला तले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी नाउ सप्लाई डिमांड सप्लाई ऊपर क्वेश्चन आसले करियो ना डिमांड सप्लाई सहित आउ केतरा इंपोर्टेंट कांसेप्ट कहूची आउ केतरा पॉइंट डिस्कस करछु व्हाट आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पूर्व ऑलरेडी पढ़ी चंदी हमें को सेक्टर अछन व्हाट आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कोन व्हाट आर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ना
Primary sector is about agriculture and allied agriculture. Secondary sector, it is about manufacturing and industry. Tertiary sector, it is about service sector like tourism, hospitality, IT, ITS, banking, defense, ये सब आसवे tertiary sector भीतर. ये तीनटा सेक्टर व्यतीत आउ दुईटा सेक्टर नुआ जोड़ा है कौन ना क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर. ना क्वाटरनरी सेक्टर किए कहा कह जाउछ क्वाटरनरी ना क्वाटरनरी सेक्टर इज अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कौन कहली क्वाटरनरी, व्हाट इज क्वाटरनरी? क्वाटरनरी इज अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट. क्वीनरी सेक्टर कौन ना? क्वीनरी इज अबाउट डिसीजन मेकिंग इन बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर. डिसीजन मेकिंग पार्ट गुडा सब आस लाइक गवर्नमेंट रे किए डिसीजन होती ना, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सेक्रेटरी, कौन सब नोचन गवर्नमेंट रे डिसीजन. बुझी बुझ बुझीगला एला सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. तापर आ गोटे पॉइंट कसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Now what do you mean by factors of production? Production, first what is production? Production is where we are taking some input, processing it and getting some output. Input which in processing and getting some output. That is called production. Now what is factor of production? Now factor of production which assists the production process. Anything that assists production, जे production को assist करूँ तो कहला factors of production. बल्कि there are 4 factors of production. को 4 factors of production? Land, labor, capital, entrepreneur. कौन कहली? Land, labor, capital, entrepreneur. ये चारिटा को हमें कहले कौन? These 4 are called as the 4 factors of production. बुझे तल फर्स्ट टाइम देखिए लैंड. ना व्हाट इज लैंड? लैंड कहले कौन बुझे हम? ना व्हाट इज लैंड? Now geography land एवं economics रे land भीतर there is a slight difference. In geography the crust is the land, but here in economics natural resources above the surface of earth and below the surface of earth ताको हम कहते land. कौन कहली? Natural resources below and above the surface of land earth ताको हम कहते land. So if there is no land there will be no production. So land means natural resource on the surface of earth or below the surface. कौन को land means natural resource on the surface of earth and below the surface. सेटा को हम land बोली कहू. Now what are the characteristics of land? Land is a free gift और land दवा पे हमको पैसा दवा पड़ुची. Marginal product आसी वर्षा, don't worry. Marginal production आसी व्यस्त होने एबे कही. Now land is a free gift or you have to pay. तुमको सर मत जागा किणी हो गले पैसा किणी हो पड़ुची. लक्ष लक्ष टका जागा पे दवा पड़ुची. दवा को पड़ुची बट ओरिजिनली लैंड हमको मिलिची केमती? पैसा दे मिलिची ना पैसा न दे मिलिची? एटा हमको मिलिची फ्रॉम द नेचर, पैसा न दे. कोडू मिलिची? एटा हमको मिलिची फ्रॉम द नेचर, पैसा न दे. फ्री गिफ्ट ना मोबाइल और इमोबाइल ये मूवमेंट करि परियो गोटे जगह आ गोटे जगह को ना करि परियोनी. नो इट कैनॉट मूव. नहीं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. नाउ इट कैनॉट मूव. सो इमोबाइल लिमिटेड सप्लाई कि नहीं? यस देयर इज लिमिटेड सप्लाई इन इलास्टिक.
and it is subject to law of diminishing production कहबी law of diminishing production कौन कहबी देखो एटा टिके बुझियो मन देख समस्त गोटे मिनिट खाली ध्यान देके बुझियो बुझी जियो ना लेट्स से अमाउंट्स ऑफ लैंड मु देखिली कि अमाउंट ऑफ लैंड 10 एकर हम एठी नेगल केते नेले अमाउंट ऑफ लैंड कम नेले एठी 10 एकर फिक्स्ड कांस्टेंट नेगले 10 एकर एंड अमाउंट ऑफ लेबर यूनिट्स नेले अमाउंट ऑफ लेबर 5 6 7 8 गोटे गोटे लेबर बढ़े बढ़े चली 5 टा लेबर 6 टा लेबर 7 8 ना टोटल यील्ड 10 एकर जीरो लेबर रे जतो लेबर ना तल जीरो प्रोडक्शन किछि प्रोडक्शन नहीं 10 एकर रे 5 टा लेबर निया गा लेट्स से प्रोडक्शन हला 10 क्विंटल केतेला प्रोडक्शन केते ना 10 क्विंटल तल मार्जिनल प्रोडक्शन केतेला ना एटी जीरो थिला एटी 10 ला मार्जिनल हला केते ना 10 केते बढ़ी ना 10 बढ़ी हैला अमाउंट ऑफ लैंड इन एकर एटी 5 टा लेबर थिला एटी बढ़ाइले गोटे लेबर 6 टा कर देली 6 टा कला पर एटी प्रोडक्शन हेगला केते ना 18 केते हेगला प्रोडक्शन 18 हेगला प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन जो 18 हेगला एटी केते बढ़िला एटी 10 थिला 18 केते बढ़ला ना 8 बढ़ला एटी आउ गोटे लेबर बढ़ाई देले 10 एकर को 7 टा लेबर कर देले तो प्रोडक्शन हेगला केते ना 25 हैना एटा कोन गेले एटी 25 तले ये केते बढ़िला ना 18 रो 25 हेले केते ना 7 ना 8 लेबर कर देले प्रोडक्शन हेगला केते ना 30 25 थिला 30 हेला केते ला एक्स्ट्रा ना 5 केते ला एटी ना 5 हेला तो मो कथा बुझेला कि नहीं एबे मते को ताले इटी 10 8 7 5 एटा देखो कमी कमी जाउछ दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न ये डिमिनिश होउछ एटा दिस इज डिमिनिशिंग कॉस्ट बुझेला डिमिनिशिंग कॉस्ट कोन आउथर देखो एटा भला सॉरी डिमिनिशिंग प्रोडक्शन बुझेला कौन पचारते वर्षा इंश्योरेंस इंश्योरेंस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट इंश्योरेंस अ फिक्स्ड हो नॉट वेरिएबल ना ओके ना व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लैंड रो बेनिफिट कौन बा लैंड रो फंक्शन कौन ना ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन देखौ छी केते हबो केते क्वांटिटी रो प्रोडक्शन हबो देखौ छी हम सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्स रो सप्लाई करू छी इट मेंटेन्स प्रॉपर लैंड टू मैन रेशियो मींस पॉपुलेशन डेंसिटी कौन देखौ छी ना इट शोज पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन सप्लाई ऑफ मिनरल रिसोर्स कौन करछि कहले इट सोर्स डिटरमाइन सप्लाई ऑफ मिनरल रिसोर्स डिटरमाइन करछि फॉरेस्ट रिसोर्स केते डिटरमाइन करछि इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं अर्बनाइजेशन प्रोसेस को भी डिटरमाइन कर नाउ व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ लैंड और इंपोर्टेंस कौन व्हाट आर इंपोर्टेंस ऑफ लैंड ना ये टोटल प्रोडक्शन देखौ छी केते क्वांटिटी रो प्रोडक्शन हो एग्रो आउटपुट केते हो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन केते हो कौन देखौ छी एग्रीकल्चरल आउटपुट देखौ छी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन केते हो देखौ छी इकोनॉमिक ग्रोथ को रेट रो इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर रेट और लोअर रेट रो देखौ छी इकोलॉजिकल बैलेंस देखौ छी इट शोज इकोलॉजिकल बैलेंस एज वेल मतलब ये सब लैंड रो बेनिफिट और इंपोर्टेंस नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी हमें लैंड रो प्रोडक्टिविटी टा को केमिति मेजर करू छे हाउ टू मेजर प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड सिंपल कथा मने कर हम पाखर अछि 10 एकर लैंड 10 एकर लैंड रो हमर होची 500 क्विंटल प्रोडक्शन ताले एवरेज हला केते ना 500 बाय 10 इज इक्वल्स टू 50 क्विंटल पर एकर 50 क्विंटल तक वाला एवरेज प्रोडक्टिविटी दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्टिविटी ना एठी 10 एकर रो होतला 500 क्विंटल मन कर हमें आउ बढ़े देले 10 एकर टा कर देले केतना 11 एकर रो मन कर हैला 600 क्विंटल 600 क्विंटल हेले एक्स्ट्रा एटी केते पड़िला ना 100 क्विंटल बढ़ी गला एटा कहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सो गोटे एकर लैंड बढ़ाई देले प्रोडक्शन टा केते बढ़ी जाउची त कहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बुझिला
कौन कहले गोटे एकर लैंड बढ़ाई देले प्रोडक्शन केते बढ़ी जाउची ताको कहले हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्लियर सिंपल कथा एवरेज ताको कहले एवरेज प्रोडक्टिविटी कोन ए दिटा हला मेथड नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड नेक्स्ट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कौन कौन प्रोडक्टिविटी किए डिटरमाइन करिवो ना फर्स्ट इज नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड नेचुरल फर्टिलिटी टा डिसाइड करूची केते प्रोडक्टिविटी टा रहियो कौन कहले नेचुरल फर्टिलिटी डिसाइड करूची प्रोडक्टिविटी केते रहइबो अधिक रहइबो कम रहइबो प्रॉपर यूज ऑफ लैंड यूज करा जाउची ना बैरन लैंड सेमती पके दिच खाली जगह टाको रखी यूज न करी के पके दिच इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड नेक्स्ट कौन इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड लैंड टाको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करा जाइछि ना करा जाय सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी जन को जदि काम करिया को दिया जाइछि लैंड टा सिक्योरिटी केते दिन पई अछि ता बगर 5 वर्ष 10 वर्ष कि 2 वर्ष केते दिन पई अछि दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी बुझिला लोकेशन को जगह रे अछि मन करो हम ज्योग्राफिकल लोकेशन अनुसार देखिबा the equator tropic of cancer tropic of capricorn 23 half north 23 half south 0 degree এই জোনটা কোন কোন না দিস ইজ কল্ড টরিড জোন দিস জোন ইজ কল্ড টরিড দেন এটি আসলে কোন না তারপর টেম্পারেট জোন এটি কোন করলা এটি গলা টেম্পারেট জোন हैला तो टॉरिड जोन मतलब को कोड प्रोडक्शन अधिक हो टॉरिड जोन ना टेम्परेट जोन प्रोडक्शन को जगह अधिक हो इन टॉरिड जोन और इन टेम्परेट जोन and why production is more in kodi production is more in temperate zone because of climate because of the climate बुझिला तो टॉरिड जोन ने प्रोडक्शन कम टेम्परेट जोन ने अधिक because it climate is moderate climate for the stationality here we are having moderate climate okay बुझिला यूनिट स्टेज पर पढ़िया वर्ष धीरे धीरे आसियो व्यस्त हो सब आसियो तो ये गला लैंड नेक्स्ट फैक्टर इज लेबर लेबर इज द ह्यूमन फैक्टर लेबर टा कोन इट ना लेबर टा कोन इट इज द ह्यूमन फैक्टर लेबर कहा कोंदी ना एक्टिविटी ऑफ मैन बाय यूजिंग हेड और हैंड कौन कहली दिस इज द एक्टिविटी ऑफ मैन बाय यूजिंग हेड और हैंड ताको हम कहते लेबर लेबर मे बी मैनुअल और लेबर मे बी मेंटल ये मैनुअल लेबर ही पारे बा ये मेंटल लेबर भी ही पारे एंड दिस इज आल्सो सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्शन लेबर रो मोबिलिटी अछि कि नहीं कैन लेबर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यस और नो कैन लेबर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस गोटे जगह आ गोटे जगह को लेबर मूवमेंट करि परिबो कि कैन लेबर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस yes but less mobility आमे कहिबा काहे कि ना डे टू डे बेसिस रे कोन मूवमेंट कर परियो मन कर चेन्नई रे दरकार कि दिल्ली रे दरकार दिल्ली कोन गोटे लेबर मूवमेंट कर परियो दिल्ली रु चेन्नई रु ओडिसा को so we cannot move in day to day basis so we cannot move in day to day basis
Next, can we accumulate labor? Can labor be accumulated? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜି ଘଣ୍ଟାଟେ ପଢେଇବିନି ମାନେ 15 दिन ପଢେଇବିନି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏକା ବେଳେ 15 ଘଣ୍ଟା ପଢେଇଦେବି ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ନ ପଢେଇକି 15 दिन ପରେ ମୁଁ ଦିନକୁ 15 ଘଣ୍ଟା ପଢେଇଦେବି ବା 20 दिन ପରେ ଦିନକୁ 20 ଘଣ୍ଟା ପଢେଇଦେବି that is called accumulation. Can labor be accumulated? No, no, labor cannot be accumulated. No, labor cannot be accumulated. Now labor supply varies over time. Yes, time अनुसार. Now mobile, yes, mobile but less. Mobile but less. Labor have alternative use, ताऊ differently use करी हबो and they generate income. And they generate income. Okay. Now what are the factors which affect supply of labor? Labor supply को को factor impact पकान. Labor supply ऊपर को factor impact पकान. First is population. Total population केते अछि एवं से population भितर total population नु skilled population केते अछि ता भितर कोन अछि ना ता भितर skilled population केते अछि बुझिला then out migration and in migration केते migration है out और in out migration केते और in migration केते गोटे जगह बाहर केते लोक जाइछन और केते आछन एज स्ट्रक्चर यूथ पॉपुलेशन केते अछि गोटे रीजन एंड मोर द यूथ पॉपुलेशन मोर द वर्क एंड यूथ पॉपुलेशन जते अधिक करबे सेते बेटर काम करि परिबे ना यूथ पॉपुलेशन केते अछि कौन बोल यूथ पॉपुलेशन केते नाउ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट केते कौन बोल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट केते बुझिला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट केते नाउ वेज रेट केते तो ये सब गुडा का इंपैक्ट पकेबे कि नहीं सप्लाई ऊपर ये सब गुडा का सप्लाई ऊपर इंपैक्ट पकेबे कि नहीं यस यस करेक्ट नेक्स्ट इंक्रीज्ड मोबिलिटी ऑफ लेबर लेबर फोर्स रो मोबिलिटी केते बेले बढ़िबो हैला इंक्रीज्ड मोबिलिटी ऑफ लेबर लेबर फोर्स रो मोबिलिटी बढ़िबो केते बेले मतलब व्हेन यू हैव इंफॉर्मेशन कि हां से जगह रे काम चेन्नई रे काम मिलुची कि दिल्ली रे काम मिलुची सो फर्स्ट इज इजी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पेशली इटा बढ़ी जाइछि आईसीटी रो यूज होला पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी जाइछि ता ग्लोबलाइजेशन होला पर ग्लोबलाइजेशन बा एलपीजी मॉडल आसिला पर बुझिला increase awareness of workers awareness बढ़िला पर ओल्ड सोशल टैबू जेमि पूर्व रुथिला कि समुद्र पार हेले मोर धर्म नाश हो जिवो इंटरनेशनल मूवमेंट लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शन लाइक नो यूएसए लगोछि डिफरेंट टाइप ऑफ वीजा रेस्ट्रिक्शंस
So gradual withdrawal of barriers on international movement. On gradual withdrawal of barriers on international movement. Slow growth of agriculture and rural employment. यदि एग्रीकल्चर और रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्लो हो जाए ऑटोमेटिकली इट विल हैव इंपैक्ट हायर एक्सपेक्टेड इनकम जो लगे कि इनकम अधिक हम से बढ़ी ना लेबर एफिशिएंसी केमती बढ़ियो मत कह हाउ टू इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी को फैक्टर रो इंपैक्ट पड़े ऑन लेबर एफिशिएंसी मींस मोर वर्क और मोर प्रोडक्शन और मोर वर्क कौन बढ़ियो ना एबिलिटी एंड विलिंगनेस यदि काम कर इच्छा अच्छे क्लाइमेट कथा ऑलरेडी कही सारी कंड्यूसिव क्लाइमेट लोकेशनल डिफरेंस मत को प्लेन एरिया और हिली एरिया को जगह लेबर प्रोडक्टिविटी अधिक रही प्लेन और हिली एरिया भितर लेबर प्रोडक्टिविटी अधिक कौट रही now mental quality is be important यदि better mental quality अच्छी ताले हो यदि better mental qualities अच्छी ताले भी हो नहीं working condition better working मुझे protection of sexual harassment यदि इटा अच्छी गोटे better conducive work environment जोटी काम करि परियो समस्त सेमते जगह अछि ताले हो if working condition is better ताले हे जो well last next one is capital now what is capital capital is an asset means which generates income जे income generate करे जे income generate करे तो कहबे हम asset so it is a produced means of production it is man made supply is elastic capital now what is the difference between capital and wealth टंका घरे रखिली हो now 2 वर्ष पर से 10 लाख हिथिबो नो इनकम बट 10 लाख टंका को मो बैंक रे रखिदेली से 2 वर्ष पर आउ मते 50,000 टंका इंटरेस्ट दे दी केते ना इंटरेस्ट दे दिथियो से 50,000 टंका बुझिला तले कोडा वेल्थ ना घरे जोटा रखिली दिस इज कॉल्ड सिंपली वेल्थ and this is capital because the capital acts as an asset capital टा हम asset last one is entrepreneur now एते गुडे या में पढ़िले लैंड लेबर कैपिटल लैंड लेबर कैपिटल जहां में पढ़िले ये सब गुडा को मन को काम करिवनि देयर समवन इज रिक्वायर्ड हु विल कंबाइन ऑल दोस थिंग्स गोटे लोक दरकार जे सब को कंबाइन करिवो ना हु इज दैट पर्सन इज द एंटरप्रेन्योर so entrepreneur is the person who takes all responsibility who decides what to produce how to produce and where to produce the entrepreneur takes risk entrepreneur has administrative skill when entrepreneur has the administrative skill entrepreneur has the managerial skill entrepreneur decides everything है कौन कहले entrepreneur decides everything is this clear land labor capital entrepreneur चारटा पार्ट बुझियला ना बुझियला मत so हम चारटा जिंस देखले लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जाको हम कहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चारटा जाको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बुझे गेला समस्त इज दिस क्लियर व्हाट क्वेश्चन को आसे which final goods produced in an economy can be classified into consumption goods and capital goods consumption goods can be further classified into consumer durables and non durables got it बुझे गेला पीहू गुड शिवांगी सौम्य समस्त बुझे गेला हां एटा को गिरी जा एटा कोन करिया
final goods produced in an economy can be classified into consumption goods and capital goods. Is this correct? The statement correct? First statement. क्वेश्चन बुझ पाला बस फाइनल गुड्स को केते भाग दिबो फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम क्लास आनिबी मुइटा करैथिली माने लास्ट नेशनल इनकम रे बुझैथिली आज रो क्लास रो क्वेश्चन होय नो प्रॉब्लम नेशनल इनकम आनिला वाला क्लास बुझै देबी व्यस्त होनी बुझ परियो मन कर गोटे कार किनुचे कार किनला से चक्कार प्राइस टा हम उथरे एक्स्ट्रा दोने सो दैट व्हील इज अ इंटरमीडिएट गुड्स जो पेमेंट करूचो दैट इज फाइनल गुड्स मु पेन किनिली पेन भीतर रिफिल अछि रिफिल पाई एक्स्ट्रा पेमेंट दोनी सो रिफिल टा सेठी इंटरमीडिएट गुड्स बट पेन सरी गला परे काली सरला परे आउ थरे जतल किनुजी रिफिल पाई पैसा दोची दैट इज फाइनल गुड्स हला ठीक अछि बोथ आर करेक्ट जो मानकर ठीक हैला ठीक अछि जो मानकर भूल हैला नो प्रॉब्लम नेशनल इनकम क्लास रे हम डिस्कस करियो तले ई टॉपिक बुझेला डिमांड सप्लाई ए जोटा पढिला हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन आज देखिले आज क्लास रो मते कहलो को टॉपिक देखिले हमें कौन पढ़िला आज क्लास रो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई तो केते इंपोर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ी चलेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दूसरा में देखले लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर ये चारिटा फैक्टर हम एटी पढ़ी और डिमांड सप्लाई ऊपर पूरा पढ़ी है क्लास 9 रू 10 टा प्रतिदिन संध्या 9 रू 10 काली भी क्लास अच्छे जॉइन करि पारे क्लास 9 रू 10 टा तो यही टॉपिक आम आज कवर कले काली क्लास रे आउ किछि इंपोर्टेंट टॉपिक आनिक आसीबी पुणी आउ किछि नुवा टॉपिक डिस्कस करे सो लास्ट टाइम टैक्सेशन करथिले आज बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक कले आउ किछि टॉपिक पुणी नेक्स्ट क्लास देखियो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू गुड नाइट